This call is now being recorded. Just give me 1 or 2 minutes, huh? We'll start. Hello, sir. Yes, welcome back.
Hope I'm audible clearly. Am I? Yes, audible. Yeah, okay, thank you. Yeah, good morning, all. Hope meanwhile some of the students will join. Yeah, hope. I think till now you've been nourished with applied thermodynamics part, uh, probably fluid mechanics, right? Strength of materials, and might be mathematics and as well as aptitude. Okay. So I think you left with only major two parts from this thermal engineering. One is the heat transfer, and second one is power engineering, that is energy engineering. Okay. So today we will deal with this heat transfer. Probably you will be aware, like what is the weightage of this heat transfer in the GATE examination. Now we are dealing with this topic for the purpose of GATE only. So you must be aware, yes, what is the weightage of these particular subjects as a curriculum in the GATE syllabus, and which one is more important. So that's what I made this heat transfer into a separate segments, like what exactly this part is having heat transfer. Are you aware what is the weightage of this heat transfer? I mean, in terms of the marks in the GATE examination. So, what marks is being allotted for this heat transfer? Anyone? Sir, about 15 near about. Not exactly 50. It will be around 6 to 8 marks total. At the max, I'm telling. Okay, not that much. You'll be having some other, some problems. Numericals will be there from the Rankine cycle and Brayton cycle. So that will be from the energy engineering, and as total together from the thermal engineering, like thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics, and energy engineering, you'll be having around 15 to, I mean, as you said, it will be around 15 to 20 marks total together. So, okay, no problem. Anyhow, my subject, that is heat transfer, what I'm dealing right now for you people, uh, is having around an weightage of 6 to 8 marks. And then I have analyzed this GATE question paper into different segments for the easiness of our study and which one we should focus for getting maximum marks with respect to the GATE examination. So when I gone through the question papers, several question papers of this GATE since I think 2003 till now 2021, I have came across with at least minimum of 3 marks from the heat transfer, and will be ranging up to 8 marks. Okay, so this was the scenario what I have observed for the last 15 years from the GATE question papers. Okay, and out of that I think I have segregated, like you will be having major topics as seven. One is on the conduction part. Particularly this conduction will be having three category, that is steady state heat transfer, unsteady state heat transfer, and conduction with the heat generation. Okay, so this is one conduction part. I mean, you are aware, I need not to tell anything about these modes of the heat transfer right now, but we can brush up in the later stages. Then you will be having a convection part, then radiation as a mode of heat transfer, then combination you will be having heat exchangers and also assisted with the fin. Okay,
So if you have a look on this conduction, convection, and radiation, yes, all these modes are there, but then conduction is having a major portion, that is steady state, unsteady state, then fins and heat generation part, four parts, and accompanied by the heat exchangers as a separate entity. But then this is the syllabus, yeah, the contents we do have for the gate. But then which is more important for the gate point of view? Which topic is to be studied? Because whenever you are taking the syllabus or whenever you are studying for the gate examination, you should make utilization of all the subjects in a efficient way so as to get the maximum marks. So which topics out of these seven will be fetching, giving you higher marks? That I would like to say. One is unsteady state heat transfer, which is compulsorily you will be having 2 marks question. I said minimum 3 marks from this subject to maximum 8 marks. So out of that unsteady state heat transfer problem will be there, which will be having 2 marks maximum. Okay, and then heat exchanger, then you do have radiation. These are the major portions which you supposed to have a look, okay, from the gate point of view. So that's what I have made these seven word documents related with the gate part, and out of this only I have prepared my presentation, which I'm going to show you now. Okay, so as a session number one, I'll be taking upon this unsteady and steady state conduction part. But as I said you, instead of having a wide look all about this conduction, four major parts, we will have a quick look and within less time how we can score maximum marks. That's what I intended to start with unsteady instead of starting from steady state, because now I'll assume everyone will be aware of these conduction processes. I mean, you will be aware of the heat transfer subject. Okay, with that, so we will move directly for the unsteady state without wasting our time, so that at least it will be more beneficial for the scoring in gate examination. And in between, if you come across with like I'm not clearly audible, or my voice is fluttering somewhere else, or my screen is not visible to you, you can assist me or you can inquire me like this is happening. So uh, even for the speed of this topic also, and even more I wanted you to solve, I'll give you all the inputs as an ingredients to you people. You supposed to cook a food for your stomach, not for me. Okay, so this I wanted. Is it okay for everyone? Will you follow? I will give you the basic inputs, basic fundamental part of all these topics, and then I'll show you the question paper. I'll show you the question from the gate, and I'll ask you to do the manipulation accordingly. So that I would like to say this would be an interactive session, teaching as well as learning together, and as well as preparing for the gate from the perspective of heat transfer. Okay, so today I wanted to finish this unsteady state, transient heat conduction, as well as fin parts. Is it okay? Okay, sir. Yeah, yeah, fine. So we'll move ahead. Uh, this is as usual the first slide. We are dealing these gate classes through this AICT sponsored Prerana Center, which is being assisted by the AICT to this college, particularly for the enhancement of backward class students. Okay, but anyhow, it's not limited to them only. Those who are interested and those who would like to take the benefit of this one, so they can avail this session, avail this benefit. Now look here, just we will brush up what this part is. You are aware about the energy transfer. Even you might have studied under the thermodynamics part also. Yes, generally we will deal with work and heat transfer. Okay, because brushing up of the ideas, terminology, what used in the content, so that will make you very clear. Yes, this is what is called as heat and what is called as heat transfer, and what is called as heat transfer rate. Okay, so in that way we can define.
So hope you are able to see this slide very clearly. You are able to identify also, classify also what is called as a heat transfer and what is called as a work transfer. Now just have a look at this pink colored equation where Q is just a heat transfer. Okay, it is a heat transfer, amount of heat, capital Q without dot. Whereas if you are coming across with this Q dot in the second equation, the pink colored equation, that is where Q dot is a constant. What is written? This Q dot is called as heat transfer per unit time. That I would like to say Q dot is equal to, through this equation, Q divided by delta T. Q divided by delta T. What is this Q? Heat transfer, okay? Heat energy upon per unit time. So that's what it's here. Heat transfer rate. The amount of heat transferred per unit time is the Q dot. So what we are evaluating, what you are calculating in the heat transfer is Q dot. Okay. So that is amount of heat transfer per unit time, like this. Then we are aware like what is called as the heat flux. It is nothing but this heat transfer rate per unit area. Heat transfer rate per unit area is the heat flux. Okay, so that is Q dot by A. So here I would like to say unit of Q is watt, whereas unit of Q dot is watt per second. Generally it is a heat transfer rate. Generally we will call it as watt only, because it is assumed, it is in a parenthesis, like yes, whatever heat part we are calculating, it will be based on the per unit time. Okay, so that is the heat flux. So heat flux is heat transfer rate per unit area, whereas the unit is, I mean, this is denoted by Q dot, and then unit is watt per meter square. Watt per meter square. Now you are aware like what is this first law of thermodynamics from the thermodynamics point of view, but then in context of this heat transfer, what exactly is, I wanted you to have a look at this first equation, that is total energy entering into the system minus total energy leaving the system, that should be compensated or should be equal to whatever the change in the total energy of the system. Okay, so this is the wide definition of a law, that is including all type of the energy. Okay, chemical energy, heat energy, work energy, potential energy, kinetic energy, nuclear energy, so and so forth. So whatever the total energy entering into the system via any mode, and whatever the energy which is leaving out of the system via any mode, that should be equal to change in the total energy of the system. But then in the perspective of heat transfer, we will limit ourselves, whatever the total amount of thermal energy entering into the system minus whatever the total thermal energy leaving the system, it should be equal to change in the thermal energy of the system. This is what we can take out of this equation. That's what I put this first law of thermodynamics slide for you people, where thermodynamics will deal with all type of the energy. I mean, it will show you the magnitude and everything, but it won't tell you in the direction, in what way it will be moving, from where to where it will be moving. So that will be dealt in a heat transfer, that you are aware. Okay, just I wanted to tell you this is a wide is equation which is generally used in a energy cases, and as far as heat transfer is concerned, we can say total energy entering minus total energy leaving, that should be equal to change in the uh, thermal energy. Okay, so that is delta E system. This is total for the energy, and this is rate of energy. I mean, rate of energy, you are aware, like with respect to some time we are calculating. Similarly, in case of heat transfer, you can say yes, rate of change of the thermal energy. Okay, that should be equal to, I'm taking in a reverse way, right hand side first I'm telling, rate of change of any thermal energy, that will be equal to difference between net energy transfer by the heat itself, amount of entering and amount of leaving. Only these two differences will be taken. That's we will say thermal energy balance, and whereas this is for total energy balance. Now we will have a look on this conduction. It's very clear to you people already, because you have studied and still you are supposed to give an examination on this part also, particularly for T class. But whereas for BE it is already over, and you are dealing with already
uh, these topics. Okay, so once again, it will be a repetition for you people for both T as well as BE class. So we will be having three modes of the heat transfer. One is conduction, convection, and radiation, like so. So this conduction, can you just brush up your ideas, because might be you are ready for your examination, practical as well as theory. You'll be having some idea about this conduction part. Can you tell me some points about this conduction? Even you can have a look on this part also. But I wanted you to give extra than what this PPT or slide is telling you. Yes, conduction, point wise, not necessary that you should read all these things. Yes, that will be there for every time with you people, like, yes, these are the fundamentals behind the conduction. Can you tell me? I said this will be a two-way interaction. I will be making you to calculate and I will making you to solve the problems sitting along with me, and I'll request you to keep calculator and notebook along with you. Yes, come on, can you tell me some points about the conduction? Yes, sir. That equation is shown to us is derived from Fourier law, Yes, exactly. which states that the rate of heat conduction is directly proportional to area of wall normal to direction of heat flow, Correct. and Yes, you are right. And temperature gradient dT by dx, which is change in temperature to the thickness of wall. exactly, exactly. I mean, it is a temperature gradient. But then here, yeah, that is one point. I mean, he said about equation what I have shown in the PPT. It was derived from the Fourier's law. Like rate of heat conduction will be directly proportional to the area normal to the heat flow, and then temperature gradient. Okay. But then if you have a look on this fourth paragraph, this definition will be something different. We will have a look on this one. Okay, no problem, because you are aware, that's what I'm asking you. One part is over. Okay, this equation is derived from by Fourier, and he said it will be rate of heat conduction will be directly equal to, directly proportional to temperature gradient and then area. Okay, and to remove that proportionality constant, he added the factor that is small k, which is called as the thermal conductivity of the material, which is the ability of that material. This is one point. Okay, second point, you can give me as clearly, like, this will brush up your ideas also, because you fed up with all the topics by studying on the gate part. Might be you'll be having different concepts from the different subjects, but then just it is from the heat transfer, it will be just brush up of whatever you have learned, and then just removing all the fundamentals out of your memories. It's a remembrance. Yes, any other point from the conduction? Yes, sir. That first paragraph, the definition is given to us about conduction. Huh, exactly. That's Yes, sir. exactly. For to understand the definition, we will uh, we have one example. That means consider a metal rod which is heated at one end. So this effect it into the increase in kinetic energy of its particles. Exactly, And these exactly. particles move rapidly with a large amplitude. So these vibrating particles set the neighborhood particles to vibrate faster, result into transferring some amount of energy to them. Yes, yes. So energy thus transferred from hotter side to colder side along that metal rod. So this method of heat transfer is known as conduction. So we This is can say that the transfer of energy from energetic particle of substance to adjacent less particle ones as a result into interaction between the particles is known as conduction. okay, okay. So that you can put it in a different way also. Instead of from the more energetic particles, just in a simple way we can say, yes, conduction happens from the higher temperature
surface to lower temperature surface. As here you can say T1 is greater and T2 is lower. Anyhow, with a graphical interpretation also T1 looking to be greater than T2 here. So it is arrow is shown that heat will be moving from the region T1 to the region T2. I mean, from the left hand surface to the right hand surface. I mean, you can put it in this way. Yes, conduction takes place from high temperature. I mean, heat transfer in a conduction takes place from high temperature region to the low temperature region. That's what face up you can take from the first paragraph. Yeah, that's second point. Third, and in fact energy, all type of energy will move from higher energy level to the lower energy level. Okay, so that is one point. Now 2 points are over. Anything you would like to say? Other students, even B students can also add their points. Yes, सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है इन गैसेस एंड लिक्विड्स. Yes, sir. It's in solid. It is due to combination of vibration of particles in lattice and the energy transport by free electrons. Means conduction in solid is equals to lattice vibration plus free electrons. Correct, We correct. can Conduction in solid takes place because of two mechanisms. One is because of molecular vibration, and second one is because of movement, presence of the free electrons. Right? I would like to say presence of the free electrons, and obviously, if free electrons are there, they will not be stationary. They starts moving here and there. So obviously, that will be there. Generally, book में लिखा जाता है कि movement of free electrons. Yeah, of course, movement of free electrons will be there. If you say electrons, if presence of electrons is there, obviously if they've been energized they start moving here and there, and that is possible only in the metal. That's what you say. Yes, this is third point. One first point I would like to say, the whatever the equation you are saying, it is derived from the Fourier. So Fourier is the best known scientist for the conduction. That's first point. Second point, in a conduction heat transfer will move from higher temperature region to the lower temperature region. In fact, it will be compulsory. I mean, I would like to say feature to have a energy transfer among the two sides. Third one is solid will be having conduction process via two mechanism. One is because of the molecular vibration. Second one is because of the presence of the free electrons. Okay, fine. Fourth point, what about the gases and liquids? Will this conduction so, happen? sir, in fluid, means in gases and liquid, the conduction is due to collision and diffusion of the molecules during their motion. Exactly, exactly. It means that free electrons will be absent in a gases and liquids, and it will be only because of the collision, not because of the vibration. Okay. Excuse me. I'll be receiving a call. It's okay. No problem. Fourth point is that in gases and liquids also conduction takes place, but then it will not be because of the. Am I audible? Yes, audible. Yeah. Even in gases and liquid also conduction takes place, but then it is not because of the vibration, or it's not because of electrons. It will be because of collision and diffusion among the molecules. I mean of the molecules during the motion. Okay. So now fifth point, where conduction process. I mean in which mode? Yeah, in which materials conduction will be more prominent, more higher. matlab among these solid gases and liquids where this conduction will be higher.
Yes. Hope I'm getting my echo back. Is it so? No, no. जस्ट a minute. इसमें से मैं स्पीकर बंद ही कर देता हूँ इधर का. या किस में से कंडक्शन ज्यादा हायर रहेंगे? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन विल बी हायर ऑलवेज इन ए सॉलिड, है ना, इन कंपैरिजन विद गैस एंड लिक्विड. इसी के लिए हम लोगों ने लिक्विड और गैस को वी विल टेक कन्वर्शन टू हैपन अमंग देमसेल्व्स, इजंट इट? इज इट राइट? Yes, sir. इसके साथ साथ में कि टू हैव ए हीट ट्रांसफर एनी कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन वी शुड हैव ए टेम्परेचर डिफरेंस. अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेंगे, इफ वी आर नॉट हैविंग एनी टेम्परेचर डिफरेंस and there is not a single possibility of transferring the heat. Okay, so to have a heat transfer process to occur, we should have a temperature difference. That's what you are looking at this point also. In the pictorial presentation also, in the pictures also, everywhere you will come across with one is higher temperature, like here in this figure T1 is higher and T2 is lower here. Okay, so this 6 point you will be keeping in your mind, and then with all these things according to the Fourier, this equation is something different. It's not according to the Fourier, but then this is only amount of rate of heat conduction through the plane layer is given, like it is proportional to the temperature difference. Look here, they are talking about only the temperature difference, that is delta T they are talking about, and then across the layer and the heat transfer area, uh, once again it is directly proportional, but inversely proportional to the thickness. Thickness is delta x, which is nothing but x minus 0, what we'll say, but together delta T by delta x we will call it as a temperature gradient. Okay, so this definition is for rate of heat conduction, but then whereas Fourier has given in a different way, like as Mandar has stated, that is like this. The rate of heat conduction will be directly proportional to area and then temperature difference, delta T, I mean dt by dx. This is called as a temperature gradient. Okay, so that you are aware. So in the increasing x direction, for example, if you take look at this example, a copper, yeah, in this example also, if it is moving from left to right, okay, so then that quantity is taken as positive quantity. And if it is moving from right to left, that is in a negative x direction, that will be taken as a negative quantity. And here dt by dx, what is given is in increasing x, matlab here 30 degree temperature is there, and on the right hand side 20 degrees there, and x is moving, x is 0 here, and x is having 1 meter when x is equal to thickness. Okay, तो फिर ये जगह पे क्या हो रहा है, we are moving, I mean heat is moving from left to right, matlab it is an increase in the x. So with increase in x you have a decrease in temperature. ये 30, फिर इधर शायद 28 रहेंगे, इधर 24 रहेंगे, इधर 22 रहेंगे, and then ultimately on the right hand side you will be having a 20 degree. So with the increase in x in positive direction, you are having decrease in the temperature. That's what this dt by dx is negative. और generally energy will not be considered as a negative. That's what इसको compensate करने के लिए, to compensate this negative sign, to compensate this negative slope, negative gradient dt by dx, we are multiplying this whole equation by minus sign. So that was an indication. Okay, now we will I'm showing this slide to you people, because in one of the GATE examination there is a question, like they'll give you all the elements, like here you'll be having gases. I mean this graph was telling you the thermal conductivity for the various materials at particularly room temperature. Okay, so this is thermal conductivity. Now you are aware what is this thermal conductivity. It is ability of a material to conduct the heat. Here it will be ranging from 0.01 to 1000. ओके, थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता है कि मेटल का क्या है, तो इट इज ए कैटेगरी है कि गैस, इंसुलेटर, लिक्विड, नॉन मेटेलिक, देन मेटल्स, प्योर मेटल्स, देन नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स. ओके, तो फिर ये ध्यान में रखो, क्रिस्टल्स विल बी हैविंग वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी देन प्योर मेटल्स.
Then pure metals will be having metal alloys. I mean higher thermal conductivity than metal alloys. Maybe matlab why I am showing you this graph is maybe they'll give you some of the material, yeah, from maybe from this list, yeah, maybe they'll tell you like yeah. So maybe in a GATE examination, they'll give you number one liquid, number two pure metal, number three non-crystallic solid, number four gases. Matlab in a whole category. Then they may ask you make a order of all these metals, either maybe in a decreasing order of thermal conductivity or maybe in the increasing order of thermal conductivity. तो फिर अगर ये आपको ये सीक्वेंस पता रहेंगे, if you are aware of this sequence, you can arrange them according to the statement in a question paper, like whether it is to be increased, so you can move from gas के बाद insulator, then liquid, then non-metallic, then metal alloy, then pure metal and crystals. If it is decreasing, you can move in a reverse way. Okay, so this is with respect to the main headings. अगर समझो उसके एलिमेंट अगर दिया गया गैसेस में हाइड्रोजन, हीलियम, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, then in under the insulator fiber, wood, foam. Okay, in the liquid mercury, water, oil, generally water and oil, and non-metallic में oxides, rock, food, rubber. Then in the metal aluminium branch, then pure metal में silver, copper, generally we will consider copper का हम लोग पढ़ाई करते ही around 400 something. Now you can have a look from here also. Silver and copper will be having in the same range above 100. मतलब generally हम लोगों ने 399 या 401 ऐसा consider करते. So then diamond will be having very high. It was actually 2300, but then here you have a limit of only 1000. Okay, so you must be aware like which part is coming under which category, and then accordingly you can make an arrangement. So even with this slide you are able to understand, yes, you can get, if such type of a question is there of making an arrangement of thermal conductivity materials either in a decreasing order or in a increasing order. Now just I wanted to show you this general heat conduction equation because you must understand what is DABA and why we are writing D and everything. Anyhow, we have told it several times, just it is a repetition. First term in this 2.38 equation, the first term was telling you about the heat flow in a, that is temperature flow in a x direction. Second term in y direction, z, and then generation, heat generation and steady state. Hope you are aware. This is what we call as a heat diffusion equation. Heat conduction equation in three coordinate system with heat generation and for steady state, unsteady state, here it is. Okay, so DABA T by DABA, and why we are using this DABA, because now it is temperature is varying in more than one element, so that's what we are taking DABA. Otherwise partial derivation का जरूरत नहीं पड़ता है, simple derivative dt by dx ले सकते हैं if it is a single dimensional flow, one dimensional flow. Okay, so this was DABA T by DABA x is in a temperature flow in x direction, and similarly DABA T by DABA y in y, and then this is in z, and then this is counting for the heat generation in the element, and then this is counting DABA T by DABA T is counting you for the steady या unsteady state. ये equation आपको पता है. Okay, so वही हम लोगों ने equation अगर, and this is for the anisotropic material. Hope you are aware what is anisotropic material, जिसका thermal conductivity okay vary होता है हर एक direction में. So that is called as an anisotropic material. Here it is kx to be written as kx, here it is to be written as ky, and here it is to be written as kz. Okay, so this is for the anisotropic material. Now if I consider isotropic material, but then keeping every term constant, then I can take this k outside, because for isotropic material k is not going to vary with respect to the direction, it is going to remain same. So in that case you can take out the k outside and you can write down the equation like this, as like in 2.39 equation. Okay, so this is generally what we will say three-dimensional heat conduction equation for isotropic material with heat generation and for unsteady state, which is called as the Fourier-Biot equation. Chances है कि ये equation देंगे और बताएंगे कि इसका नाम बताओ क्या है. So you should be able to understand. Okay,
And then what is this alpha? Alpha is nothing but K by rho C, which is called as the thermal diffusivity. It is nothing but ratio of thermal conductivity to the heat capacity, rho into C. Okay, so this is for Cartesian coordinate. Similarly, अगर आपको पॉइजन में करना है, इक्वेशन करना है, so then I would like to say steady state कर दो, right hand side 0 करो, then you will get Poisson equation. Then heat generation 0 करो, keep this unsteady state, you will get this diffusion equation, and then Laplace करने के लिए you can have this equation. Okay, so मतलब this Laplace is going to be, this is for no heat generation and for steady state. So generally ऐसे ही किया जाता है. You are aware, this is only an indication. Maybe हो सकता है कि अब तक तो ये क्वेश्चन आया नहीं था, but maybe now cylindrical coordinate में कैसे लिखा जाता है, that also you are aware, but इधर significance नहीं है, but मैं just आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है. And overall I'll show you the biggest equation where you are able to write that equation in either Cartesian coordinate या cylindrical coordinate या spherical coordinate. This is for the spherical. General equation दिखाता हूँ मैं आपको. Now look here, this is the combined one dimensional heat conduction equation. This is for the one directional के लिए. Okay, तो फिर ये equation अगर आपको ध्यान में रहेंगे, you are able to write it either in a Cartesian coordinate या in a cylindrical coordinate या in a spherical coordinate. मतलब just by understanding what is this, ये equation ध्यान में रखना पड़ेंगे. This is I would like to say one dimensional heat conduction equation for anisotropic material या isotropic material, whatever it is, with heat generation and for unsteady state. What is unsteady? You are aware, temperature is going to vary with respect to the time. Okay, so if you are going to put n is equal to 0 for the plane wall, so this is going to be becoming 1 upon r into 0 1, so this is going to become 1 only, and this is 1, so obviously d by dr of k into d dabba t by dabba r plus e generation is equal to rho c. So ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का प्लेन वॉल का इक्वेशन हो जाएंगे. समझो n इज इक्वल टू इधर 1 रखेंगे, मतलब दिस इज 1 by r and r into k dabba t by dabba r हो गए, तो it will going to become a cylindrical equation. अगर 2 रखेंगे तो it's going to become a spherical equation. Just I'll take back to you. Have a look here. For the spherical, you'll be having a square here. Okay, ये 3 dimensional का है, but then I'm showing you 1 dimensional heat generation and unsteady state equation. और इधर cylindrical में r is to 1. Okay, 1. और ये this is for the Cartesian coordinate. तो फिर इसके लिए ये अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे, and just put 0 1 2. 0 is for cylindrical, I'm sorry, Cartesian coordinate, 1 for cylindrical and 2 for spherical. ये आप लोग लिखते जाओ, बट एक ही थिंग है, प्लेन वॉल के लिए रेडियस नहीं रहेंगे, ये रेडियस को x से रिप्लेस करना पड़ेंगे, दैट्स इट. अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सेम. मतलब ये तो वन हो जाएंगे, बट देन डाबा t by डाबा r के अलावा डाबा t by डाबा x लिखना पड़ेंगे ओनली फॉर द प्लेन वॉल. ओके, बिकॉज वॉल इज नॉट हैविंग ए रेडियस पार्ट, इवन क्रिटिकल रेडियस में भी वैसे ही पार्ट आएंगे. Now hope you are aware another mode of a heat transfer convection. इसमें भी फट से वो जो 4 points बताए थे ना, वो points वापस से repeat करो, so that we will understand. Yes, you are also aware of this convection process. We can move ahead. Yes. Be quick. जैसे हम लोगों ने 5 points बताए थे उधर conduction की जरूरत है. These are the requirements of a material to have a conduction process. वैसे ही कि what are the requirements of this convection process? Come on, first point. I'll say first, temperature difference must be there. Okay, तो ही convection heat transfer चालू होगा. दूसरा, second, yes. The first one is due to diffusion, means energy transfer due to random molecular motion. Correct. जो And हम लोगों second one is ने energy transfer by bulk or microscopic fluid motion. okay, microscopic या bulk fluid motion. Now what is bulk fluid motion? Why we are not taking only motion of the molecules? Why we are calling about bulk motion?
ओके, चलो वो पॉइंट पे आते हैं, Sir, सेकंड। ओके, because convection involves the combination effect of conduction and fluid motion. हाँ, conduction and fluid motion, this is a third point. Okay, this is not a pure mode of heat transfer. Convection always follows the conduction. मतलब until unless you have a solid, you are not able to transfer the heat by convection. That's good. Okay, तो second point, he said, first point उन्होंने बताया कि it will happen only because of the molecular diffusion, मतलब movement के वजह से. Okay, उसी के वजह से होगा. Second point, I think he narrated about which point? Bulk and microscopic fluid motion. मतलब बल्क फ्लूइड मोशन रहना चाहिए, वैसे दूसरा पॉइंट बताया. बट वी विल टॉक अबाउट दिस बल्क फ्लूइड मोशन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बल्क फ्लूइड मोशन. ओके, थर्ड पॉइंट. It involves the combination effect of conduction and fluid motion. हाँ, वो तो बताया आपने. ओके, फाइन. सो इट विल बी हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन एज वेल एज बल्क फ्लूइड मोशन. ओके, फोर्थ पॉइंट. यस, फोर्थ पॉइंट. सॉलिड में होता है क्या कन्वेक्शन? No sir, solid से liquid को होता है. सॉलिड से सॉलिड का जरूरत पड़ता है लिक्विड Yes में sir. हीट ट्रांसफर करने के लिए, हाँ. वैसा Yes है sir. ना? सॉलिड का जरूरत पड़ता है लिक्विड में या फ्लूइड में हीट ट्रांसफर करने के लिए. ओके, दैट्स फाइन. नाउ माय क्वेश्चन इज बल्क फ्लूइड मोशन. नाउ आप लोग ये पिक्चर देख रहे हैं इधर. ओके, हॉट ब्लॉक जो दिख रहा है इधर, पहले वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेरिएशन ऑफ द एयर ऐसा दिया. इधर कुछ वेलोसिटी ज्यादा दिख रहा है. प्रोफाइल आपको बताएंगे कि upper side में on the top side you will be having higher velocity, and if you come down you'll be velocity is diminishing, कम हो रहा है, velocity is decreasing, and then this is called as no slip condition. What is the velocity over here? I mean near to the surface. What is the velocity here? ये प्रोफाइल बता रहा है कि ये वेलोसिटी जो है ना इधर जीरो है, and then velocity is coming increasing, and after some distance, जिसको हम लोगों ने बोलते हैं कि बाउंड्री लेयर थिकनेस क्रॉस होने के बाद उसका जो वेलोसिटी रहेंगे वो वेलोसिटी अटेन हो जाएंगे. सो हियर यू डू हैव वेलोसिटी जीरो. तो इज इट पॉसिबल टू हैव ए मोशन ओवर देयर? No sir, not possible. तो फिर उसके ऊपर का जो लेयर है ना उसमें वेलोसिटी है. इसी के लिए ये सारे वेलोसिटी का जब एवरेज करेंगे आप, कंसिडरिंग जीरो आल्सो, जीरो प्लस ये वेलोसिटी प्लस ये वेलोसिटी प्लस ये वेलोसिटी, ऐसा जब तक ये डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एच हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर खत्म नहीं होता ना, तब तक का वेलोसिटी आप सब एवरेज करेंगे ना, जो वेलोसिटी मिलेंगे, so that we will say it is a free stream velocity, and because of that only we will say bulk fluid motion. क्योंकि बल्क क्यों बोलते हैं? ऊपर ज्यादा वेलोसिटी है, बीच में कम है और नीचे जीरो है. डू यू गेटिंग? अगर मैंने मोशन बताया तो फिर इधर मोशन पॉसिबल ही नहीं. बॉटम ये जो, that's what we'll say कि no slip condition if we are considering these layers like this. If any fluid coming over here and touching to the surface will be retarded by the surface because of friction, and it will be stopped down, जिसको हम लोग बोलते हैं कि no slip condition. This layer which is coming and touching the surface will be completely come to the rest. I mean it won't move further, it will be sticking to the surface, जिसको अपन बोलते हैं कि स्लिप होता नहीं है, नो स्लिप कंडीशन. ओके, स्लिप होने का चांसेस ही नहीं है. आर यू गेटिंग? तो ये सारे कंसिडर करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि बाबा बल्क फ्लूइड मोशन रहना चाहिए, मैं कम से कम माइक्रो लेवल पे तो रहना चाहिए, जैसा उसका एक स्टेटमेंट था. ओके, तो फिर बल्क फ्लूइड मोशन की जरूरत है. कन्वेक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस का जरूरत है. इधर भी हाई ट्रांसफर रीजन टू दी लो टेम्परेचर रीजन नहीं जाएंगे. ओके, और दूसरा समझो बल्क फ्लूइड मोशन नहीं रहेंगे, if you are not having any motion of this fluid, तो कन्वेक्शन पॉसिबल है क्या? Not possible. नॉट पॉसिबल. तो फिर तब भी हीट ट्रांसफर होगा, तब आप बोलना पड़ेंगे कि सर हीट ट्रांसफर होता है बट बल्क फ्लूइड मोशन नहीं है, इसी के लिए कन्वेक्शन नहीं है, तो ये कंडक्शन है.
ओके, जैसा हम लोगों ने कंडक्शन में देखे थे, क्योंकि गैस एंड लिक्विड्स आल्सो कंडक्ट द हीट, ऐसा उन्होंने बताया था उधर। बट उस टाइम में बल्क फ्लूइड मोशन जीरो था उधर कंडक्शन में, बट इधर कन्वेक्शन में बल्क फ्लूइड मोशन रहेंगे, जीरो नहीं रहेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस वी शुड हैव ए बल्क फ्लूइड मोशन, और जितना ज्यादा मोशन रहेंगे उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। ओके, तो इसमें आपको पता है कि हम लोगों ने कन्वेक्शन में कितना पार्ट्स में करते हैं, कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन और Natural. natural convection. What is the meaning of forced convection? This one, पहला फिगर जो बता रहे, हॉट एग के सामने एक फैन रखा है, दिस इज द फोर्स्ड Sir, कन्वेक्शन। forced convection means we use external agencies like fan, blower, compressor. करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही पिक्चर दिखा रहे, देखो इधर एक फैन है और उसको हमने फोर्स्ड कन्वेक्शन बता रहे हैं, और इधर फैन नहीं है, ओनली सिंपल हॉट एग एक प्लेट के ऊपर रखे, नहीं तो टेबल के ऊपर रखा है, और जो नेचुरल एयर जो आ रहा है उसके सराउंडिंग में वो उसको कूल कर रहे हैं, मतलब ये हॉट एग है, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो इट इज अ नेचुरल कन्वेक्शन, देयर इज नो any, I mean they are not made use of any external agency over here, fan भी। ओके, तो ये दो टाइप का है। नाउ यू कम ऑन टेल मी कि कौन सा कन्वेक्शन में ज्यादा हीट ट्रांसफर होता है, either in forced convection or in natural convection। हेलो, Forced. फोर्स्ड कन्वेक्शन में, क्योंकि फोर्स्ड कन्वेक्शन में एक एक्सटर्नल एजेंसी यूज करते हैं, वेलोसिटी आप इंक्रीज करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर आता है उधर, है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर आपको पता है कि वो पर्टिकुलरली कन्वेक्शन में लिया जाएंगे वापस, रेनॉल्ड्स नंबर, नसेल्ट नंबर और सारे। बट इधर ये फंडामेंटल आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या है कि आप एक्सटर्नल एजेंसी यूज करते हैं उधर, आप लो करते हैं फोर्सिबली, तो फिर ऑब्वियसली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी मोर इन केस ऑफ ए फोर्स्ड कन्वेक्शन एंड विल बी लेस इन नेचुरल कन्वेक्शन। तो फिर अभी आप लोगों ने पढ़ाई किया है, तो फिर फोर्स्ड कन्वेक्शन ये कैसे है कि यस सर, फोर्स्ड कन्वेक्शन में रेनॉल्ड्स नंबर आता है और नेचुरल कन्वेक्शन में रेनॉल्ड्स नंबर नहीं रहते। रेनॉल्ड्स नंबर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ग्राशॉफ नंबर ओवर देयर, because it is because of only buoyancy forces, gravitational forces, viscous forces, उसी की वजह से बल्क फ्लूइड मोशन होता है ना। और इवन आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं इवापोरेशन और कंडेंसेशन, बट दैट्स आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कन्वेक्शन, बट देन इट इज कमिंग अंडर द बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, वो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, एज फार एज ओनली गेट इज कंसर्न। ओके, नाउ तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको पता है कि दिस इक्वेशन इज गोइंग टू गिव यू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन, क्यू डॉट कन्वेक्शन। क्यू डॉट क्या है, हीट ट्रांसफर रेट, मतलब हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एच ए एस टी एस माइनस टी इंफिनिटी, कैसा भी हो सकते हैं। व्हाट इज एच, convective heat transfer coefficient, watt per meter square degree centigrade, ts is the surface temperature, t infinity is the temperature of the fluid sufficiently far from the surface, not exactly near the surface, मतलब वो भी एक एवरेज ही है। एंड देन ए एस इज द सरफेस एरिया, अगर समझो आप प्लेट के ऊपर कंसिडर करें तो हॉट एग के जितना टच है ना, वो सरफेस एरिया आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, इन दैट वे। तो ये जस्ट एक एग्जांपल्स है, कुछ वैल्यूज है एच वैल्यू का। एंड इवन यू आर अवेयर लाइक यस, कन्वेक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन ज्योमेट्री, नेचर ऑफ द फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, so and so forth, and bulk fluid velocity, as I told you. Then coming to the another mode of heat transfer and prominent mode of the heat transfer, radiation. Okay, generally हम लोगों ने दो ही मोड रहते हैं, कंडक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन क्योंकि प्योर मोड नहीं है, बताया भैया कितने बारे में। कम ऑन नाउ फ्यू पॉइंट्स अबाउट दिस रेडिएशन। यस, I mean I'm asking you few points about this radiation. Sir, in radiation, heat is transferred from electromagnetic wave as a result of changing electronic configuration.
ओके, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या फोटन की सबसे मूवमेंट होगा, मतलब हीट मिलेंगी, एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। ओके, Sir, देन it to transfer heat, it does not require any medium, or it also transfer heat through in a vacuum. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब इसमें वैक्यूम में भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि इसको सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए और गैस चाहिए, किसी में भी ये हीट ट्रांसफर हो सकता है। रेडिएशन को कुछ ऐसे जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड ऑफ एनी मीडिया for this radiation to transfer its heat. Okay, third point, जैसे हम लोगों ने कंडक्शन कन्वेक्शन में बताया कि हीट ट्रांसफर विल मूव फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू द लोअर टेम्परेचर रीजन। रेडिएशन में वो स्टेटमेंट वैलिड है क्या? Sir, also hot body also emits radiation and cold body also emits radiation. हाँ, इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ओनली हार्ड बॉडी शुड एमिट एंड कोल्ड बॉडी शुड रेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएशन हॉट बॉडी भी एमिट करेंगे, कोल्ड बॉडी भी एमिट करेंगे, बट ओनली एक कंडीशन है, इट शुड बी अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहेंगे तो दे कैन स्टार्ट एमिटिंग दी रेडिएशंस। ये आप ध्यान में रखने का। देखो, ये जो ग्रीन कलर के लिखे ऑल बॉडीज एट ए टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट 0, ओके, मतलब एग्जैक्टली 0 केल्विन, ओके, तो वो सारे एमिट कर सकेंगे। और वो भी हम लोग जो डील करते हैं वो थर्मल रेडिएशन है, जो सेंसिबल है अपने को, वो रेडिएशन हम लोगों ने डील करते हैं। यू आर अवेयर, लाइक you only presented the radiation chapter, you are aware like what are the relation between this wavelength and n number of spectrum for this solar radiation what we are receiving, and then how you are making a differentiation, like these are the radio waves, these are the ultraviolet rays, these are the cosmic waves, and this is thermal radiation, that is generally in the range of 10 raised to minus 1, मतलब 0.1 to 100 माइक्रोमीटर वेवलेंथ रेंज में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं स्पेक्ट्रम का, so that is coming under a thermal radiation. Only that much we are dealing in a radiation chapter, not all radiation. Okay, only thermal radiation in the range of 10 raised to minus 1 to 10 100. Okay, वो range में. Then what else you would like to say? कि वैक्यूम में भी होता है, वैक्यूम में दूसरा नहीं हो सकते, वैक्यूम में रेडिएशन हो सकता है, राइट? एनी अदर पॉइंट्स यू वुड लाइक टू कोट? Sir, no, another that three laws of radiation. हाँ, 3 laws of radiation. Okay, come on, tell me which are those laws? Sir, Wien's, then Kirchhoff's and Stephen Boltzmann. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दूसरा किरचॉफ्स लॉ, ओके, अब्सॉर्बिटी इज इक्वल टू एमसीयूटी, देन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जनरली अभी रेडिएशन में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ही ज्यादा रहता है, और गेट के लिए आपको वो और रेडिएशन शील्ड के ज्यादा आएंगे। Okay, now as I said, like yes, Stephen Boltzmann law is governing this one. So rate of amount of radiation energy which is being emitted will be directly proportional to fourth power of the absolute temperature. Absolute temperature इधर मतलब हमेशा आप लोगों ने केल्विन पे बात करना चाहिए। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए सिग्मा एक कांस्टेंट हम लोग ने लेते हैं विच इज कॉल्ड एज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, स्टीफन एक साइंटिस्ट है, बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट है, दोनों मिला के लिया था। सो दैट्स व्हाट एवरी टाइम यू विल से स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट्स नॉट ए सिंगल नेम। तो उसका वैल्यू है 5.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4। ये मैक्सिमम है, व्हाई इट इज मैक्सिमम? समझो अगर मुझे ये, हाँ, मैक्सिमम मतलब कौन सा बॉडी में मैक्सिमम मिलता है आपको? Black. ब्लैक बॉडी, उसी के लिए उधर एमिसिविटी जो है ना, इधर एमिसिविटी रहता है मगर एमिसिविटी 1 रहता है ब्लैक बॉडी के लिए, इसी के लिए वो दिखाया नहीं इधर, बिकॉज इट इज 1, इट इज देयर इनहेरेंट। अब इधर देखो उन्होंने दिया है
अगर नॉन ब्लैक बॉडी रहता तो यू कैन से कितना हो सकता है, यू विल बी अकम्पनीड बाय वन लेटर एप्सिलॉन which is nothing but it will tell you the value of emissivity, okay, radiation emitted by the real surface जिसको हम लोग बोलते हैं, whereas this one is for the black surface, okay. तो दैट इज मैक्सिमम देते हैं ब्लैक बॉडी, वो मतलब उधर एमिसिविटी इज इक्वल टू 1 रहते हैं, whereas other real bodies will be having emissivity less than 1, इसी के लिए ये वैल्यू इससे भी कम रहेंगे. Hope you are aware, and then you are aware like what is this emissivity. It is the measure of how closely a surface approximates a black body. Otherwise you can define this as amount of heat transfer by any body to the amount of heat transfer by the black body. अगर समझो मैंने this divided by this किया, so that is going to give me the emissivity. That is, this is for any body, q dot emit divided by q dot emit maximum is going to be the emissivity, because this is always maximum, and then its range will be in between 0 and 1, okay. So for this you are aware. Now look here. So this is what we have just brushed up all the ideas related with conduction, convection and radiation part. Now as I told you, a transient का ज़्यादा इसमें weightage है GATE examination में. Now we will have a look on this transient heat conduction. What is transient heat conduction? Can you tell me? We had studied this under unit number 2. Yes, transient heat conduction या unsteady heat transfer. Can anyone tell me what is the meaning of this one? I'll show the next picture, at least you can understand. ये 2-3 स्लाइड के बाद डायरेक्टली हम लोगों ने गेट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, बिकॉज ये अगर आपको फिर वापस अब ब्रशअप करके आइडिया बाजू में रखेंगे, साथ में रखेंगे, so then it will become very easy to compute the values. Yes, can you tell me what is called as unsteady state heat transfer या transient heat transfer? Sir, heat transfer to be steady if temperature is independent of time. इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल टाइम कितना भी होने दो, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, और टाइम के साथ अगर टेम्परेचर वेरी होता रहेंगे, जैसे अभी सन है, ओके, मॉर्निंग में एक टेम्परेचर देता है, आफ्टरनून में एक, और इवनिंग में एक, और नाइट में एक, मतलब डिपेंडिंग अपने सीजन आल्सो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. सो दैट यू कैन से, तो टेम्परेचर सेम नहीं है टाइम के साथ, इट इज ए डिपेंडेंट. अगर 12 बजे ज्यादा देता है और मॉर्निंग में 5 बजे 4 बजे कम रहते हैं, फिर इवनिंग में कम रहते हैं, सो दैट यू कैन से यस, टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी टाइम. अगर इंडिपेंडेंट है, सॉरी उधर डिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है, सो देन यू कैन से इट इज ए स्टडी स्टेट. अनस्टडी स्टेट है ना, डिपेंडेंट रहना है, उसी के साथ में डिपेंडेंट रहना है, दैट इज ट्रांजिएंट. इसमें दो टाइप का था, वन इज लंप्ड सिस्टम, सेकेंड वन इज ट्रांजिएंट सिस्टम. ये दोनों भी पिक्चर दिखा रहे हैं, दोनों भी पिक्चर है ना, क्लियरली दिखा रहे हैं आपको कि वन इज लंप्ड सिस्टम. जस्ट हैव ए लुक, मैंने आपको बताऊंगा इधर. कॉपर बॉल which is having 70 degree everywhere is an example of a lumped system, whereas the roast beef which is having different temperatures 110, 90, 40 like this is a unsteady state, I mean transient system. एटलीस्ट ये पिक्चर के साथ आप मुझे बताएंगे कि why it is called as a lumped and why this is called as a transient. Yes, Sir, in
कॉपर बॉल में हम किसी भी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर लेंगे तो वो थ्रू आउट सेम रहेगा 70 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मतलब उसमें किधर भी कौन सा भी पोजीशन पे आप ले लो टेम्परेचर, हर एक जगह पे, दैट इज फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी, किधर भी ले लो उसका टेम्परेचर सेम रहेंगे एट एनी पर्टिकुलर टाइम। एट एनी पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर चेंज होगा, बट एट एनी पर्टिकुलर टाइम दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट सेम। मतलब अभी फॉर एग्जांपल ये आपने जीरो टाइम पे कंसिडर कर रहे हैं, तो जीरो टाइम पे सब जगह पे 70 रहेंगे। 2 मिनट के बाद समझो ये कूल होता है, समझो, सो उस टाइम में एवरीवेयर समझो 65 आता है सेंटर का, एंड देन ऑन द पेरिफेर आल्सो यू विल बी हैविंग 65 65 65 65 65, मतलब आफ्टर सम टाइम। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, टेम्परेचर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि अभी जीरो टाइम पे 70 है और 2 मिनट के बाद ये 65 होगा, और 2 मिनट के बाद शायद 60 होगा, बट 60 सब जगह पे कॉमन रहेंगे। मतलब टेम्परेचर इज गोइंग टू वेरी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, but at any particular instant everywhere the temperature is going to remain constant same, that you call it as a lumped system. Okay, बरोबर है ना? And then what about this second figure, roast beef? सर टेम्परेचर चेंजेस विथ पोजीशन। पोजीशन मतलब देखो, आउटर सरफेस में 110 डिग्री है और अंदर 90 डिग्री है और उसके अंदर भी 40 डिग्री है। मतलब हियर विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन, मतलब ये लोकेशन के अंदर ही अलग अलग टेम्परेचर है बॉडी में, मगर इधर कॉपर बॉल में लोकेशन मतलब हर एक लोकेशन में सेम टेम्परेचर। तो दिस कैन बी मॉडल्ड एज ए लंप्ड, वेयर एज दिस कैन बी मॉडल्ड एज ए ट्रांजिएंट सिस्टम। मतलब इधर ये लंप्ड सिस्टम है, टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वेरी होगा बट लोकेशन के साथ नहीं। और ये जो है रोस्ट बीफ है, ये टेम्परेचर टाइम के साथ भी वेरी होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू से, ये जीरो टाइम पे कंसीडर करो, 110 90 और 40, समझो 2 मिनट के बाद ये 110 का शायद हो सकता है कि 105, और 90 का हो सकता है कि 88, और 40 का हो सकता है कि 39। मतलब हर एक जगह पे टेम्परेचर चेंज होगा आफ्टर सम टाइम, बट दैट इज नॉट seen in the copper ball. Everywhere we have seen this same temperature, isn't it? But that is not going to be same in case of this one, where even it temperature will change with respect to time, but also with respect to the location. कौन सा लोकेशन? जनरली हम लोग ने 3 डायमेंशनल कंसिडर करते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो फिर हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। मतलब लोकेशन के साथ भी वेरी, टाइम के साथ भी वेरी, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रांजिएंट हीट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रांजिएंट कंडक्शन, मतलब लोकेशन के साथ भी चेंज और टाइम के साथ भी चेंज। तो फिर हम लोग जो पढ़ाई करेंगे और जो गेट में जो आएंगे ना प्रॉब्लम्स, वो सारे लंप्ड सिस्टम से आएंगे। मेजॉरिटी 99.99% विल बी फ्रॉम लंप्ड सिस्टम। वी विल सी लंप्ड सिस्टम के कैसे एनालिसिस करना है। मतलब ये ओनली पार्ट, मतलब दिस इज ओनली टेम्परेचर इज ओनली द फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर इज ओनली द डिपेंडेंट ऑन टाइम, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जैसे आप लोग ने बताया था कि सर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट रहेंगे तो स्टडी स्टेट, और डिपेंडेंट रहेंगे अनस्टडी स्टेट। तो अनस्टडी में भी दो पार्ट, एक ओनली टाइम के साथ डिपेंडेंट, दूसरा टाइम और लोकेशन के साथ डिपेंडेंट। ओके, तो टाइम और डिपेंडेंट है ना ट्रांजिएंट, और ओनली टाइम के साथ है ना लंप्ड सिस्टम। ये लंप्ड सिस्टम हम लोग देखते क्या है। तो ये मतलब इस डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हैव ए लुक ऑन दिस लास्ट पिंक कलर्ड इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन, t of t minus t infinity divided by ti minus t infinity is equal to e raised to minus b into t, where b is has by rho vcp multiplied by, मतलब where b is only this much, okay, and it is multiplied by t। तो ये इक्वेशन, मतलब ये ध्यान में रखो, वेर आई वुड लाइक टू से T infinity is the surrounding temperature, Ti is the initial temperature of the body, and T of T is the temperature of the body at any particular time जो दिया गया है वो, ओके, एंड देन स्मॉल t is the time, ओके, वो टाइम पे जो टेम्परेचर मिलता है वो T of T है।
और ये टाइम एक ही रहेंगे. एंड देन B is it is a replacement for this whole equation, that is HAS by rho VCP. What is H? Convective heat transfer coefficient where this body was kept, uska. Then what is AS? Surface area of the body. Okay, A area, surface area. Then what is rho? Density of this body, kg per meter cube. And what is V? It is the volume of the body. And then Cp is specific heat of the body at constant pressure. Okay, तो फिर ये इक्वेशन ध्यान में रखो और इसी के ऊपर अपने को करने का सारे बात. ओके, सो ये इक्वेशन हम लोगों ने ये लिखा जाता है. नाउ इसमें आप लोग ट्रांसिएंट हीट में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तीन इक्वेशन ध्यान में रखो. दिस इज rate of convection heat transfer between the body and its environment at particular time. ये जो पार्ट है ना, at particular time this is the rate of heat transfer. मतलब समझो एखादा हॉट बॉडी लेके 1 घंटे तक आप लोग बाहर रखेंगे और 1 घंटे के अंदर समझो आपको लगा कि 15 मिनट के बाद क्या टेम्परेचर वो रहेंगे, सो दैट यू कैन कंप्यूट फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ द टोटल अमाउंट, समझो 1 घंटे तक रुके और आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो दैट इज गोइंग टू गिव यू द टोटल अमाउंट. और मैक्सिमम जो है तो ये रहेंगे कि बाबा इनिशियल टेम्परेचर ये बॉडी का कितना था, फिर एनवायरनमेंट का कितना था. ऑब्वियसली दैट विल बी द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस, इजंट इट? Ti minus T infinity या T infinity minus Ti. मतलब ये भी मैंने आपको बताया था कि T infinity minus Ti, it is inherent that T infinity is greater than Ti here. अगर मैंने Ti minus T infinity भी लिख सकता हूँ, उस केस में Ti will be greater than T infinity. And M is mass of the body, Cp is specific heat. तो ये तीन ध्यान में रखो. This is at any particular time, this is the total amount and this is going to be the maximum rate of heat transfer. कभी भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, क्योंकि इसमें टाइम का पार्ट नहीं आता है, इट इज ओनली वो मास और स्पेसिफिक हीट और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या था और इनिशियल टेम्परेचर क्या था. और इधर जो है टोटल अमाउंट में, ये टोटल अमाउंट आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि वो टाइम कंसिडर करके टोटल वो पर्टिकुलर टाइम पे कितना होता है. समझो 10 मिनट के बाद कितना, 15 मिनट के बाद कितना, आधा घंटे के बाद कितना, 45 मिनट्स के बाद कितना, वैसा ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये भी है at any particular time, at any particular time, particularly 10 मिनट के बाद ही उतना ही. ओके, सो दैट यू कैन कैलकुलेट. तो फिर दिस इज अ क्राइटेरिया फॉर लंप्ड सिस्टम टू बी कंसिडर्ड. वन इज यू शुड थिंक ऑफ दिस बायोट नंबर. ओके, बायोट नंबर आपको पता है कि HLC by K हम लोग ने लिखते हैं and the same formula is used in case of convection also, जिसको हम लोग ने नसेल्ट नंबर बोलते हैं, but you forget about नसेल्ट नंबर here. Biot number is HLC by K, where H is convective heat transfer coefficient, K is thermal conductivity of this body, और नसेल्ट नंबर में K is thermal conductivity of the surrounding body. मतलब मीडिया का convective कंडक्शन था और इधर दिस इज कंडक्शन ऑफ ए सॉलिड बॉडी, ये ध्यान में रखो. एंड LC इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन केस ऑफ ए लंप्ड सिस्टम? इट इज वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया. वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया, इसीलिए वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का जो यूनिट है आपको मीटर ही मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ये ध्यान में रखने का. तो ये दो क्राइटेरिया ध्यान में रखो. LC कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये अलग अलग के लिए अलग अलग रहेंगे. और उसके बाद में बायोट नंबर कैलकुलेट करो. then see that Biot number should be less than or equal to at the max, less than or at the max equal to 0.1. And when this Biot number is less than or equal to 0.1, that means that you are considering that body as a body whose temperature is changing only with respect to the time, not with respect to the location. तब भी थोड़ा सा ये रहता है क्योंकि आप लोगों ने के जो है ना ऐसा बॉडी का इन्फिनिटी होता है तो वो का अपने पास है ही नहीं ऐसा बॉडी, तो तभी इसीलिए बोलते हैं कि बाबा ऐसा टेम्परेचर सेम, मतलब जस्ट आई वांटेड टू टेल यू लाइक समझो अगर हर एक जगह पे टेम्परेचर सेम रहेंगे सो देन देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर टू हियर, क्योंकि सेंटर में भी 70 है और बाहर भी 70 है. क्योंकि अपने को फंडामेंटल पता है कि टेम्परेचर अगर सेम रहेंगे, if there is no temperature difference, heat transfer does not take place. इसका मतलब सेंटर पे भी 70 और बाहर भी 70 तो फिर where is the question of heat transfer to take place? इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस रखते हैं सेंटर और सराउंडिंग पे.
मतलब समझो इधर 71 और इधर 70, या इधर 72 और इधर 70, ताकि डिफरेंस आ जाता है कि 2 डिग्री का, एंड दैट विल यूज फॉर लंप्ड सिस्टम। ऐसा जब हम लोग ने यूज करेंगे ना, मतलब वही ये बायोट नंबर बताता है कि बायोट नंबर अगर लेस देन 1.1, नहीं तो फिर बोलेंगे कि सर ये क्या किधर से क्राइटेरिया लेके आए आपने, बायोट नंबर लेस देन या 0.1 क्या इंडिकेट करता है। तो समझो बायोट नंबर आपका एट द मैक्स 0.1 होता है, तो फिर आपने जो कंसिडर किया ना, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस वो 5 डिग्री परसेंटेज पे रहेंगे। जस्ट हैव ए लुक एट दिस वन। when Biot number is either less than 0.1 or at the max equal to 0.1, then the temperatures within the body relative to the surrounding, it will remain within 5% of each other. Okay, for example, now I would like to tell you कि अगर इधर 70 डिग्री है, तो फिर इधर का टेम्परेचर आप लोगों ने 75 या 78, ताकि वो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस का जो परसेंटेज है ना 5% पे रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा बोलेंगे कि सर तो वैसे भी कंसिडर करना है ना, तो फिर मैं इधर 100 कंसिडर करता हूँ और इधर 70, 100 माइनस 70 30 डिग्री हो गया। सो 30 डिग्री इज फॉर 70 डिग्री, तो 100 मतलब परसेंटेज में आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिर अलग आएंगे। So that will not be allowed. So that's what, to have that criteria, we should keep this value, like Biot number should be less than or equal to 0.1. And then what exactly this Biot number indicates us? Biot number is like this, it is HLC by K. This can be written in both the way like this, 1 H into delta T, just उन्होंने multiply किया H as it is the, एक k के नीचे एलसी लिया, ओके k के नीचे एलसी लिया, एंड देन ही मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो h डेल्टा टी हो गया, मतलब इट इज ए कन्वेक्शन हीट फ्लक्स। एच ए लिखेंगे तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, और इधर के ए डेल्टा टी बाई एलसी लिखेंगे तो ये कंडक्शन हीट ट्रांसफर। देखो ये कन्वेक्शन फ्लक्स और ये कंडक्शन हीट फ्लक्स, ओके। तो फिर इट इज कन्वेक्शन एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, कन्वेक्शन किधर होता है, सराउंडिंग दिस बॉडी, और कंडक्शन किधर होगा, विद इन द बॉडी, इसके अंदर। तो फिर बायोट नंबर इज सिंपली एन इंडिकेशन ऑफ कन्वेक्शन एट द सरफेस ऑफ द बॉडी टू द कंडक्शन विद इन द बॉडी। या दूसरा वे से भी अगर आपको डिफाइन करना है तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस, यू कैन टेक दिस LC by K as it is and you can send this H to the denominator, it is 1 upon H. So what is this LC by K, जो हम लोगों ने कंडक्शन इक्वेशन में देख रहे थे, इट इज एन रेजिस्टेंस, मतलब K LC by K अगर कंडक्शन हो, K by LC अगर कंडक्शन का फॉर्मूला होता है तो उल्टा लेंगे, LC by K लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएंगे वो। So it is also written as conduction resistance within the body, okay, conduction resistance within the body to the convection resistance outside the body, मतलब at the surface. So फिर you can name this Biot number in both the way, you can take this meaning in both the way, you can remember this definition both the way. Accordingly there might be some questions in a gate like yes अगर ऐसा body है तो फिर ऐसा कैलकुलेट करो कि Biot number ऐसे ऐसा आ रहा है, तो what is the significance of that one, okay, you should aware। इसके साथ में फोरियर नंबर भी आता है, वो इधर अपन लिया नहीं है। नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑल these GATE क्वेश्चन पेपर्स, बी रेडी विथ योर कैलकुलेटर एंड पेन, ओके। ये प्रॉब्लम देखो और किधर आपको दिक्कत आता है तो फिर उसमें मुझे बताते जाओ। होप इसमें से अगर सर ये पता नहीं, फार्मूले पता नहीं चल रहे थे तो फिर बताओ मुझे, आई शो यू। In fact, for third year students I have solved it, even for B class also I have taken this GATE questions for you people। Are you ready? मुझे only दिखाना है नहीं, I wanted you to do calculation of this one, and who is going to give me the first answer, let me see। Yes,
Meanwhile, I'll post you attendance link also. Are you able to do this one? पहले क्या करो, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैलकुलेट करो, वॉल्यूम बाय एरिया, मतलब इट इज ए स्टील बॉल. होप यू विल रिमेम्बर, हम लोगों ने प्लेट के लिए, इसके लिए, स्लैब के लिए, मतलब प्लेन वॉल रहेंगे तो वी आर कंसिडरिंग हाफ द थिकनेस, राइट? या थिकनेस एज ए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. सिलेंडर के लिए r/2 कंसिडर करते हैं बिकॉज वॉल्यूम बाय एरिया. और स्पीयर के लिए once again volume by area, volume is 4 pi 3 pi r cube divided by 4 pi r square. तो फिर r/3 is going to be the characteristic length for the sphere. Now it is a steel ball. तो पहले, मतलब ये पूरा देखने की जरूरत नहीं, आपको दो ही इक्वेशन यूज करने, पहले कैरेक्टरिस्टिक लेंथ देखने का है, फिर बाद में बायोट नंबर वेरीफाई करना है, एंड देन आई विल शो यू द इक्वेशन, उसमें कंप्यूट करके टाइम कैलकुलेट करना है. Now characteristic length for this one is, come on tell me, it is 60 mm, diameter is 60. Can you able to tell me? r/3 is going to be the, are you doing 0.01. कितना? 0.01 मीटर. हाँ, 0.01 मीटर. मतलब ओनली अगर मिलीमीटर में आपको बताए तो 60 मिलीमीटर डायमीटर है, इसका हाफ करो, 30 मिलीमीटर हो गया. वो रेडियस डिवाइड बाय 3 है ना, 30/3 मतलब 10 मिलीमीटर उसका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो गया. मतलब 10 मिलीमीटर को ही मीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय 1000, मतलब 0.01 मीटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. नाउ ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यूज करो 0.01 एंड देन मेक यूज ऑफ दिस h value is equal to 20 watt per meter square Kelvin और k value भी दिया है 40. So give me the Biot number. मतलब I wanted you to calculate this Biot number. h LC by k. LC आपने कैलकुलेट किया, h दिया है, k दिया है. Give me the value of Biot number. h is 20, k is 40 and LC is 0.01 जैसे आप लोगों ने कैलकुलेट किया. ये ध्यान में रखो, स्पीयर के लिए r/3 लिख के रखो चाहे तो बाजू में, सिलेंडर के लिए r/2 और प्लेन वॉल के लिए थिकनेस, समटाइम्स अगर सिमेट्री रहेंगे तो हाफ ऑफ द थिकनेस. तो वॉल्यूम बाय एरिया के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट इज बायोट नंबर? इज इट कमिंग लेस देन 0.1? 5 into 10 raised to minus 3. मतलब लेस देन 0.1. Yes, sir. हाँ, तो यू कैन मेक यूज ऑफ इक्वेशन. वो इक्वेशन मैं देता हूँ, मतलब ये इक्वेशन दोनों भी साइमल्टेनियसली आपको दिखाऊंगा. सो नाउ यू आर मेकिंग यूज ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, मतलब t of t minus t infinity divided by ti minus t infinity is equal to e raised to minus b into t. Okay, where b is HAS by rho VCP. Otherwise I would like to say इसको भी आप लोग रीराइट कर सकते क्योंकि V by AS is कैरेक्टरिस्टिक लेंथ था, V by A वॉल्यूम बाय एरिया, इसी के लिए H by rho CP LC भी आप लोग ले सकते, H अपन rho CP LC. Shall I write it in the chat box या you are able to do this? LC का नोट कर दो बस, दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं. 1/0.01 ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं. आपको इसमें से कौन सा वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और टाइम क्या दिया है कि देखो, व्हाट इज एक्सपेक्टेड हियर. I'll show you the problem. What is expected? Time required to in second to cool the steel ball from 1030 to 430 degree centigrade. तो टाइम कैलकुलेट करना है, दो ही रहते हैं. ये टाइम कैलकुलेट करना है, b into t, ये टाइम कैलकुलेट करना है.
ओके, बी वैल्यू कैलकुलेट करो सेपरेटली, एच. Hope you are able to eliminate this exponential form. Minus b into t is equal to ln of the left hand side, natural logarithm of this left hand side. ओके, तो फिर आपको टी ऑफ टी कितना दिया है और टी इन्फिनिटी सर कितना एल टी बाय रो होना डायरेक्ट. है? एक मिनट दिखाता हूँ. टी इन्फिनिटी कितना है और टी आई कितना है और टी ऑफ टी कितना है वो देखो, क्योंकि टी टाइम कैलकुलेट करना है इधर. सर टी आई इज 1030 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट करेक्ट, 1030 डिग्री सेंटीग्रेड इज ए टी टी आई आई इनिशियल टेम्परेचर, और टी इन्फिनिटी 430. नहीं, कूल करने के लिए बता रहा हूँ, 1000 to 430 तक कूल करना है. इसका मतलब वो टाइम पे 430 होना है, मतलब टी ऑफ टी इज 430. और टी इन्फिनिटी जो है ना उन्होंने किधर रख, क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर है, ये इसका नहीं, एनवायरनमेंट का नहीं है. बॉडी टेम्परेचर 1030 to 430 होना है. तो फिर वन इज टी आई, सेकेंड वन इज टी. अभी टी इन्फिनिटी, ये जो बॉडी कौन सा मीडियम में रखा है उसका टेम्परेचर, मतलब नाउ लुक हियर, suddenly removed from the furnace and cooled in ambient air at 30 degrees centigrade. T infinity is 30. Okay, T infinity is 30, Ti is 1030, and T of T is 430. I'll take you back to this one. ये जो टेम्परेचर T of T divided by 1030 minus 30 is equal to e raised to minus b into t. ये टाइम कैलकुलेट करना है आपको, तो इसी के लिए एक्सपोनेंशियल निकलने के लिए क्या करो, माइनस बी इंटू टी इज इक्वल टू लैन ऑफ दिस वन. पहले कितना आते बताओ. तो फिर टाइम कैलकुलेट करके आप लोग मुझे बता सकते. वैल्यू भी चाहिए तो फिर मुझे और एक बार नहीं, और एक बार नहीं ओपन होगा दूसरा. आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर मुझे बताओ कि आई राइट इट इन ए चैट बॉक्स. आई रिपीट, लैन ऑफ न्यूमरेटर में 430 माइनस 30, क्योंकि मुझे टेम्परेचर वो टाइम होने के बाद 430 होना चाहिए और इनिशियल टेम्परेचर है 1030, और ये मटेरियल मैंने एनवायरनमेंट पे रखा है जिसका टेम्परेचर है 30. तो फिर इट इज 430 माइनस 30, मतलब 400 हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय 1030 माइनस 30 मतलब 1000 हो गया. 400 बाय 1000 वेरी क्लियर है, 2 जीरो चला गया, 4 बाय 10 मतलब 0.4. सो लैन ऑफ 0.4 कितना आता है, लैन ऑफ 0.4. सर एक मिनट कैलकुलेशन करें. हाँ, वैल्यू अगर दिखाना है तो मैं दिखाता हूँ, फार्मूला दिखा रहा हूँ, तो अगर आपको वैल्यू का प्रॉब्लम है तो फिर दिखाऊंगा, नहीं तो लिख के रखो. आई एम टेलिंग यू, टी इंफिनिटी इज 30, टी आई इज 1030, और टी ऑफ टी इज 430. तो लेफ्ट हैंड साइड्स इजीली निकल जाएंगे. दैट सर माइनस 0.9162. हाँ ठीक है, लैन ऑफ देखो माइनस पॉइंट जो भी है, मतलब लैन ऑफ 0.4 किया ना आपने,
Yes, sir. हाँ, तो उसका वैल्यू माइनस में आया। और राइट साइड में देखो, इज इक्वल टू माइनस बी इंटू टी है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए आपने लैन लगाए थे उधर। तो माइनस बी इंटू टी, ए माइनस और ओ माइनस कैंसिल हो गया, तो फिर इट इज बी इंटू टी इज इक्वल टू दैट मच। टी इज इक्वल टू जितना भी वैल्यू मिला है ना, डिवाइडेड बाय बी करो। ओके, वेयर बी इज एच ए एस बाय रो वी सी पी। आई रिपीट, जो भी आपको वैल्यू मिला है दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय स्मॉल बी, वेयर बी इज एच ए एस बाय रो वी सी पी। नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू को रो वी सी पी, नहीं तो रो सी पी एल सी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय एच करो, खत्म। I'll put it in chat box चाहिए तो। टाइम इज इक्वल टू, करीना ने ऑलरेडी वैल्यू लिखा है 2144.16। जस्ट वेरीफाई करो, टाइम इज इक्वल टू जो भी आपके आंसर मिला है वो मल्टीप्लाइड बाय रो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और सीपी डिवाइडेड बाय एच। सॉरी, और रो होना चाहिए था, एना हो गया वो। नहीं सॉरी सॉरी, इट्स राइट। आंसर, जो भी आंसर मिला है वो मल्टीप्लाइड बाय रो multiplied by LC multiplied by CP divided by H is going to give you the time. 2144 is the option by Karina. Let me see. हाँ, मतलब she is telling me option is D. Mandar is also telling the same, 2144. Anyone else? Who else is here? दो का आंसर सेम है, अक्षय, अमर, किरण, ओंकार, तेजस एंड विशाल। दोनों का आंसर है। Shall I give you the answer? Shall we verify? ये करते, बाकी का बाकी लोग सब लोग करेंगे। I'll show you the answer. ये आंसर is 2144 सेकेंड, मतलब ओके, आंसर डी is the right answer for you people for this question. Shall we proceed? Now look here, this is a statement. आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखते जाओ कि इसमें से कौन सा हो सकता है। स्टेटमेंट इज स्पेरिकल स्टील बॉल, मतलब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वापस r by 3, 12 मिलीमीटर डायमीटर, इज इनिशियली एट 1000, मतलब Ti is 1000 Kelvin. It is slowly cooled in the surrounding of 300 Kelvin, मतलब T infinity is 300. Heat transfer coefficient is 5 watt per meter square Kelvin, and then thermal conductivity is 20. The temperature difference between the center and the surface of the steel ball is, ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स।
इसमें इनहेरेंट है कि हम लोगों ने बायोट नंबर लेस देन 0.1 क्यों कंसिडर करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उसके लिए ये क्वेश्चन है गेट का। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ ए स्टील बैल कम आता है कि ज्यादा आता है, मतलब दो ही है, लार्ज है तो क्यों है, स्मॉल है तो क्यों है। लार्ज तो दो ऑप्शन है, स्मॉल का दो ऑप्शन है। आप पहले वेरीफाई करो कि वो क्या हो सकता है। वो वेरीफाई करने के लिए आपको बायोट नंबर वेरीफाई करके लेना पड़ेंगे, तब आप लोग बोल पाएंगे कि हाँ सर बायोट नंबर की सबसे ये वैल्यू ऐसा है कि वेदर इट इज लार्ज और स्मॉल। इसमें मुझे पहले बायोट नंबर इवेलुएट करो। HLC/K, एलसी क्या है, 12/6, 2 mm का है, 0.02 इसमें आएंगे। H5 है, K 20 है। Hope someone has put the value, I think. यस, बायोट नंबर कितना आता है बताओ। आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कि why this answer is right or why this answer is wrong. इसमें से मतलब पहले स्टेटमेंट पे मत जाओ, पहले बायोट नंबर कैलकुलेट करो, फिर उस पे आप लोग वो रिलेशन लगा सकते हैं। करीना इज टेलिंग बायोट नंबर इज 0.0005, मतलब लेस देन 1 है ना। Yes ठीक है, sir, एक same. वैल्यू कैलकुलेट किया तो हाँ, कि Same आ रहा है. 12 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय, मतलब वो डायमीटर था, उसको रेडियस करता हूँ 6 mm हो गया, और डिवाइड बाय 3 करना है क्योंकि बॉल है, तो फिर इट इज 2 mm इज ए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। एच वैल्यू 5 है, 5 इंटू 0.02, हाँ, डिवाइडेड बाय 20, वो हिसाब से वो वैल्यू मिला है। नाउ आई शो यू द डेफिनेशन ऑफ दिस बायोट नंबर, क्यों अपन बायोट नंबर कंसिडर कर देते हैं। नाउ लुक हियर, बायोट नंबर इज व्हाट, बायोट नंबर इज, एक है कन्वेक्शन एट द सरफेस, दूसरा कंडक्शन विद इन द बॉडी। और उन्होंने जो दिया है प्रॉब्लम में, क्या दिया है कि कंडक्शन रेजिस्टेंस और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, मतलब आई शो यू रिलेशन बिटवीन दिस कंडक्शन रेजिस्टेंस वाला डेफिनेशन। नीचे वाला देखो, बायोट नंबर इज नथिंग बट कंडक्शन रेजिस्टेंस विद इन द बॉडी एंड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब ये बायोट नंबर इज 0.005 है तो इट इज लेस देन 1, इसका मतलब लंप्ड सिस्टम वैलिड है। और लंप्ड सिस्टम कब वैलिड है, when temperature difference between center and somewhere else on the surface is very less, तो ये आपको ये 5% रेंज पे आता है। तो फिर अभी ये वैल्यू कम है, मतलब आपका टेम्परेचर डिफरेंस कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे, बिकॉज बायोट नंबर इज वेरी लेस, आई मीन लेस देन 0.1, राइट। या मंदर इज ऑल्सो गिविंग आंसर इज ऑप्शन डी, ऐसा बता रहे हैं। सो कंडक्शन रेजिस्टेंस मतलब लेस है, ये ज्यादा है, वो अपन ऑप्शन देखेंगे। और कब कम रहते हैं, व्हेन कंडक्शन रेजिस्टेंस इज लेस एंड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज मोर। जनरली डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा रहेंगे तो आपका बायोट नंबर कम आता है, और डिनोमिनेटर का वैल्यू कम रहेंगे तो फिर आपका बायोट नंबर ज्यादा आता है। इधर बायोट नंबर लेस है, इसका मतलब कन्वेक्शन रेजिस्टेंस एट द सरफेस ऑफ द बॉडी इज हायर। तो नाउ लुक हियर, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ द स्टील बॉल। अभी ये टेम्परेचर के ऊपर मत देख, कम रहेंगे, वो तो कम मिला है क्योंकि बायोट नंबर इज 0.005। तो फिर कब हो सकता है, व्हेन योर कंडक्शन इज स्मॉल, बिकॉज कंडक्शन रेजिस्टेंस इज फॉर लेस देन द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। कन्वेक्शन रेजिस्टेंस नीचे था तो ज्यादा है बता रहे हैं, एंड देन कंडक्शन रेजिस्टेंस इज स्मॉल। तो ऑप्शन इज आई थिंक लुकिंग टू बी डी। यस करीना एंड अदर्स, can you tell your options? Mandar has given option as D.
टेम्परेचर डिफरेंस इधर कम है क्योंकि बायोट नंबर 0.005 है, या ओंकार इज गिवन, करीन इज आल्सो गिवन द डी ऑप्शन. लेट मी शो यू द आंसर. या ऑप्शन इज डी ओनली, कि temperature difference between the center and the surface of the steel ball is small here because Biot number is 0.005. And what is the significance of Biot number? Biot number, it's a ratio of conduction resistance to the convection resistance. तो फिर D वाला इसमें exactly match होता है. Now another question to you people. A small copper ball of 5 mm, मतलब क्या करने देखेंगे. 500 Kelvin is dropped into an oil bath. Okay, it's 300 Kelvin. The thermal conductivity of the copper is 400. Density is 9000. Specific heat 385. Heat transfer coefficient 250. Okay. Lumped analysis is assumed to be valid. No problem. मतलब आप Biot number calculate करने की भी जरूरत नहीं है. The rate of fall of the temperature of the ball at the beginning of the cooling will be in K, मतलब Kelvin per second. ये calculate करते के देखो. Rate of fall of the temperature of the ball. कुछ अगर दिक्कत आते रहेंगे तो बताओ कि इवन आई कैन शो यू द एनालिसिस आल्सो. दिस इज आल्सो रिलेटेड विथ ए स्फीयर. 5 mm डायमीटर है, मतलब 2.5 mm इज ए रेडियस, डिवाइडेड बाय 3 करो, दैट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. 500 K इज ड्रॉप्ड, मतलब इनिशियल टेम्परेचर इज 500 केल्विन और T इंफिनिटी इज 300 एंड K ऑफ द कॉपर इज 400. डेंसिटी दिया है, सब कुछ दिया है. The rate of fall of the temperature of the ball, मतलब आपको dt by dt निकलना है at the beginning. अगर आपको पल्ले में नहीं पढ़ रहे तो बताओ कि I'll show you the analysis directly, कि we won't waste time. सुनो इधर, इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं पूछ रहे और टेम्परेचर भी नहीं पूछ रहे. रेट ऑफ फॉल ऑफ द टेम्परेचर, मतलब dt by dt पूछ रहे हैं, कौन सा टाइम पे ये होता है. तो फिर इसके लिए क्या करता हूं, मैं आपको ये एनालिसिस से दिखा दे, आंसर दिखाऊंगा फिर एनालिसिस दिखाऊंगा. आंसर इज 17.3, मतलब ऑप्शन इज सी. why we are getting negative? Because it is fall of the temperature. Okay, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, so that's what it is minus 17.3. आपको इसका एनालिसिस दिखाऊंगा मैं. ओके, खाली नीचे 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 लैब में. ओके, एक ध्यान में रखो कि इसका मतलब एनालिसिस आपको दिखाना है 17.3 का. नाउ ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये करो, फिर आपको -17.3 का दिखाता हूँ. Spherical thermocouple junction of diameter 0.706, मतलब this is also related to sphere. मतलब ये भी आपको ध्यान में आ रहा है कि you need not to see other values. Characteristic length, most of the problems from the transient will be on the spherical part only, जिसका characteristic length r/3 ये है. ओके, नहीं तो डायमीटर के हिसाब से अगर लेना है तो d/6 है, तो ये 0.706 mm डिवाइडेड बाय 6 करो डायरेक्टली, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. एंड देन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 400 है. फिजिकल प्रॉपर्टी में थर्मल कंडक्टिविटी दिया है, सीपी दिया है, रो भी दिया है और टेम्परेचर भी दिया है. थर्मोकपल का इनिशियल टेम्परेचर मतलब टी आई इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड और इज प्लेस्ड इन ए हॉट स्ट्रीम, मतलब टी इंफिनिटी भी दिया है 300. देन टाइम टेकन टू रीच
by the beat to reach through 298, मतलब टी ऑफ टी भी दिया है. पहला प्रॉब्लम जैसा है एज इट इज सॉल्व करो. आपके पास अगर पहला वाला प्रॉब्लम का फॉर्मूला रहेंगे तो वैसे यूज करो एंड देन गिव मी द वैल्यू ऑप्शन. I think even you need not to go for evaluation of a Biot number क्योंकि it is every time it was presumed that it is related with the lumped system only. तब भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो करके ही कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन मैनिपुलेट टी ऑफ टी माइनस टी इंफिनिटी बाई टी आई माइनस टी इंफिनिटी. मतलब सिंपली हम लोग कैसे बोलते थे कि थीटा बाई थीटा जीरो इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस बी इंटू टी. इधर टी कैलकुलेट करना है डायरेक्टली आप लोग ले लो टी इज इक्वल टू या माइनस बी इंटू टी इज इक्वल टू लैन ऑफ, कैलकुलेट करो. इनिशियल टेम्परेचर 30 माइनस 300 डिवाइडेड बाय I'm sorry ln of कितना टी ऑफ टी 298 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 300 कितना होता है देखो. I'll repeat ln of 298 minus 300. T of t is 298. T infinity is 300 divided by Ti is 30 and T infinity is once again 300. कितना आ रहा है बताओ मुझे. करीना is telling 4.91 मतलब ऑप्शन बी. ओके या अक्षय गरड ऑप्शन बी. ओके चलो डायरेक्टली ऐसा भी करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरा टाइम भी बच जाएंगे. आंसर 4.91 सेकेंड. ओके चलो तीन आंसर मिला है, सो वी विल हैव ए लुक. या राइट आंसर. आंसर इज 4.9 मतलब योर ऑप्शन इज राइट. ओके नाउ इसको कंप्लीट करो. 2016 का 2 मार्क का था ये. Steel ball once again 10 millimeter diameter at 1000 Kelvin is required to be cooled to 350 Kelvin by immersing in a water environment at 300 Kelvin. देखो पहला वाला प्रॉब्लम का अगर वैल्यू सेम रहेंगे तो फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. Convective heat transfer coefficient is 1000, thermal conductivity is 40, time constant for the cooling process tau is 16 second. Time दिया इधर, the time required in second to reach the final temperature is. इसमें अगर आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आता तो फिर मुझे कुछ टाउ टाइम कांस्टेंट क्या होता है. I think now I supposed to show you what is called as time constant here. किसको अपन 1/b अपन बता रहे थे. Now just I'll show you which is time constant. देखो b वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली दिया है, टाइम कांस्टेंट 1/second. b वैल्यू डायरेक्टली दिया है. ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. b वैल्यू डायरेक्टली दिया है, इसी के लिए रो वी सी पी एच ए का जरूरत नहीं पड़ेगी शायद. I'll repeat b value which is called as a time constant 1/second is directly given to you as something 17 second कुछ तो भी था. Let me, yeah 16 second. b is directly given or 1/b.
तो डायरेक्टली कर सकते हैं आप, 2 मार्क के लिए देखो बहुत सिंपल था। I'll repeat, 1/b डायरेक्टली दिया है तो आप लोग b का भी वैल्यू निकल सकते हो 1/16 करके। ओके, टाइम कैलकुलेट करना है और लैन और टेम्परेचर वैल्यू भी दिया है। स्टील बॉल 8000 K इज TI, ओके वो TI है, और T of T is 350 K and then T infinity is 300. Be quick. I think 16 तक आगे तो और 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे, we'll see. Yes. चैट बॉक्स में डाला है। ओके, फिर ओपन करना, ठीक है। इधर बता दो कुछ वैल्यू। 1, ओके 42.23, ठीक है, एक आंसर है 42.23। The time required in second, okay 42.23 second. Any other answers? I'll repeat ln of numerator में 350 minus 300 मतलब 50 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 300 मतलब 700 है, और 1/b डायरेक्टली दिया है और टाइम कैलकुलेट करना है। एक आंसर एक ने बताया। यस, शैल वी सी द आंसर? शैल वी गो फॉर द आंसर? या 42.22 सेकेंड, मतलब ठीक है, कैलकुलेटर के हिसाब से थोड़ा फर्क कम ज्यादा हो सकता है, बट देन कैलकुलेटेड आंसर इज 42.22। नाउ इसमें से अभी देखो ये थोड़ा सा अलग है, टाइम दिया है 90 सेकेंड और आपको टी ऑफ टी कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या करो, ई रेस टू माइनस बी इंटू टी कैलकुलेट करके रख दो पहले। टाइम दिया है 90, बी कैलकुलेट करो, एच अपन रो एल सी सी पी। एच दिया है आई थिंक यस 200 है, डिवाइडेड बाय रो 9000 है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ 60 बाय, शायद आई थिंक पहला वाला जैसा ही है 60/6 डायरेक्टली 0.01 इज ए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, और सीपी सीपी वेयर इज सीपी? नहीं तो कितना लेंगे सीपी? एयर जेट ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एयर का सीपी कितना रहता है उतना ले लो। कैन यू पोज मी द आंसर? एयर का सीपी कितना रहता है? नहीं रहेंगे तो नहीं देंगे तो इट्स एयर जेट, राइट? वन ले लो, 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। इसमें टी ऑफ टी कैलकुलेट करना है, माइनस टी इंफिनिटी इज 20 डिग्री divided by ti is 220 minus 20,
इसका मतलब टी ऑफ टी इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप लोग कैसे ले सकते हैं, 20 प्लस ई रेस टू माइनस बी इंटू टी, 20 प्लस ई रेस टू माइनस बी इंटू टी, बी इज इक्वल टू एच बाय रो एल सी सी पी, सी पी आपको इधर एक लेना है, इसका मतलब एच बाय रो एल सी बस उतना ही लेना है, एच इज 200, रो इज 9000, एल सी इज 0.01, मतलब 60 डायमीटर है उसका, हाफ 30, और स्पीयर है इसीलिए आर बाय 3 से कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। मंदार 141.33, 141 मतलब ए, ऑप्शन ए, इट्स his answer is option A. करीना, हैव यू गिवन, नॉट सीन, यस 141, ठीक है चलो, दोनों का आ रहा है तो यस, इट्स आंसर इज 141 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 141.3, तो वैसा मैच होने वाला एक ही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ ये 2020 का है, ओके, आई थिंक जस्ट ये स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू डू इट। इधर आपको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, एच वैल्यू, ओके, यू कंप्यूट इट, स्क्रीनशॉट ले लो एंड कैन डू दिस। एच ए बाई रो वी सी पी में एच कैलकुलेट करना है, बाकी सारे दिया है उन्होंने, और ये भी स्पीयर का है, तो टी आई 100 है, टी इंफिनिटी 20 है, और टी ऑफ टी इज 28, और टाइम इज 4.35 सेकेंड, एवरीथिंग इज गिवन। डेंसिटी रो दिया है 8500, सीपी दिया है 400, ओके, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इधर कितना आएंगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 3, मतलब वो मिलीमीटर में इंटू 10⁻³ आर यू एबल टू डू दिस वन, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट, आंसर वेरीफाई करो, आंसर दिखाऊंगा, वेरीफाई करो, विल यू डू दिस, will you do this? Yes, sir. Yeah, I think option is going to be the D, okay, वेरीफाई करो आप, वेरीफाई करके मुझे बताओ कि सर मेरा सही है कि गलत है, बाद में, ओके। नाउ ये 21 का एक ये था, आई थिंक दिस इज 21 है, मतलब लास्ट क्वेश्चन रहेंगे, या सेट 1 के सेट 2 रहेंगे, तो आप बता सकेंगे क्या कि स्टेटमेंट आपको बताना है ओनली इधर, ये हॉट स्टील स्फेरिकल बॉल इज सडनली डिपुट इनटू द लो टेम्परेचर ऑयल बाथ, which of the following dimensionless parameters are required to determine the instantaneous center temperature of a ball using the Isler chart, मतलब Isler chart है ना, वो ट्रांजिएंट में आता है, तो बताओ कि इजी है आई थिंक, ऊपर का दो ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि वो कन्वेक्शन रिलेटेड तो नहीं है चैप्टर, नसल भी नहीं है, रेनॉल्ड भी नहीं है, ओनली नीचे वाला सी और डी में कौन सा, बताओ मुझे, ऑप्शन इज ओनली सी एंड डी, 50% ऑप्शन तो मैंने दे दिया, डी, करीना, यू सी बायोट नंबर एंड फ्राउड नंबर है, फ्राउड फ्राउड, हाँ हाँ करीना बराबर, फ्राउड नंबर नहीं अपने पास, बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर है, तो मतलब वो भी क्लियर है, वो फ्राउड नहीं है, तो ऑप्शन इज सी, ओके, या दिस इज आई थिंक लास्ट स्लाइड, ये पहले आप लोग अटेंडेंस दे दो इसके ऊपर, जस्ट अ मिनट, मैं इसमें भी रखता हूँ, put your attendance here also as well as in that Google form, इधर भी दे दो,
इधर भी अटेंडेंस दे दो और फीडबैक भी दे दो गूगल फॉर्म पे। Yes, put your attendance here. ओपन हो रहे क्यों? हेलो अक्षय, अमर, ओंकार, विशाल, Yes, करीना, sir. मंदर ओपन हो रहे हैं? हाँ ओपन हो Yes, रहा है sir. सर। और किरण भी। इधर भी अटेंडेंस दे रखो। ओके, अक्षय, अक्षय का हो गया। ओके, अमर गुड से, अमर गुड से के कितने? Yes, sir. 26. लिख दो है तो। मंदर तुम्हारा भी लिखो अटेंडेंस। मंदर अटेंडेंस कितने? 40। ओके, 59 डन। थैंक यू। आर यू फिलिंग दैट गूगल फॉर्म कंप्लीटेड? वही सर, वही फील कर रहे थे। हाँ कर दो कर दो। कंप्लीट होने के बाद बताओ। अगर कल मुझे शायद 1 ही घंटे लगेंगे फिंच के लिए, ज्यादा क्वेश्चंस उसमें नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजिएंट के ऊपर मतलब सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है और ज्यादा मार्क्स भी मिलता है। ओके, तो उस हिसाब से करो। एनीहो अगर समझो टाइम मिला तो फिर बाकी कभी ले लूंगा मैं स्टडी, इसका स्टडी स्टेट कभी और फिन कभी। और शायद गाउंडे सर वगैरह हीट ट्रांसफर इसके ऊपर लेंगे, हीट एक्सचेंजर्स के ऊपर, और तोड़करे सर रेडिएशन के ऊपर लेंगे। ओके, अगर वो नहीं लेंगे तो फिर मेरे पास है ऑलरेडी ड्राफ्टेड, आई सेंड यू। After filling the form, you can just tell me कि sir it's over, and then after that you can leave. But मुझे एक बार बता के, अभी आपका एक प्रैक्टिकल का भी पेंडिंग है। उसका डिटेल्स देता हूँ। तो सबमिशन का क्या? एक मिनट। यस, सबमिशन HMT के लिए। सबमिशन। हाँ वही, अभी कैसे कि 2-3 दिन पहले ही फिक्स हुआ ना यूनिवर्सिटी का, बट स्टिल वो 15 तारीख को एक मीटिंग होने वाला है, ऑफलाइन की ऑनलाइन। बट तब तक दोनों भी रेडी है। लैब मैनुअल आपको ऑलरेडी दिया है, उसमें क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, एक बार मैंने क्लास लेके बताऊंगा मैं 1 घंटे में आपको। ओके, मतलब ऑफलाइन रहेंगे तो फिर थोड़ा सा और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, लाइक आपको इधर आना पड़ेंगे, कंडक्ट करना पड़ेंगे, उसके हिसाब से लैब मैनुअल लिखना पड़ेंगे। ओके, शायद वो 15 तारीख को फाइनल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी से मीटिंग। मीनवेल अगर समझो ऑनलाइन ही कंप्लीट होने वाला है किस टाइम भी, तो इन केस, इन दैट केस जो आपको ऑलरेडी मैंने लैब मैनुअल दिया था अफेक्टेड ड्यू टू द कोविड ऐसा,
तो उसी में क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, मैंने आपको बताऊंगा 15 तारीख को, नहीं तो फिर जैसे ही पता चला तो तभी। एंड देन आफ्टर दैट आई विल टेक वन क्लास बिफोर दैट कि हाउ टू फेस द एग्जामिनेशन इफ इट इज ऑनलाइन, कि कैसे दिया जाएंगे क्वेश्चंस और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ओके, एंड इफ इट इज ऑनलाइन देन यू सपोज टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल एट योर होम ओनली ऑन द वर्चुअल लैब। उसका मैंने प्रैक्टिकल डिटेल्स दे दूंगा शीट गूगल शेयर पे, और आप घर पे बैठ के प्रैक्टिकल करो वर्चुअल लैब पे, वो सेटअप यूज करके, लिंक भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। एंड देन बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल यू सपोज टू गिव दी ओरल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर ऑफलाइन है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि आप लोग इधर आएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, फिर ओरल भी होगा। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग। यू नीड नॉट टू वरी कि नहीं अभी तक कुछ सर ने बता ही नहीं रहे क्या है, कि इट इज पेंडिंग बिकॉज ऑफ ओनली दैट कंफ्यूजन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। ओके, just it is a matter of 1 or 2 hour, 1 hour for me, and even you can also do it very comfortably। उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ने प्रैक्टिकल किया है, शीट आपके पास है, आपका वैल्यू भी आपके पास है, सो दैट कैन बी एंटर्ड इन द लैब मैनुअल। इज इट क्लियर? Yes. हाँ, यू नीड नॉट टू वरी कि सर सारे सब्जेक्ट का हो गया, हीट ट्रांसफर क्यों नहीं। हीट ट्रांसफर का इतना ही है कि उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो दैट्स व्हाट आई एम kept it in a pending. What about this numerical methods, NM? Do you have practical or only term work or oral? Only term work and insane. ओके, तो फिर ओनली मेरा ही Yeah. सब्जेक्ट है इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, या दूसरा भी है? No, sir. Only HMT. ओनली HMT, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और नीड नॉट टू वरी। And assignments. हाँ, असाइनमेंट का यार देता हूँ मैं, असाइनमेंट का हर एक एक प्रॉब्लम मैंने करके रखा हूँ, और 1 यूनिट का लास्ट यूनिट कर रह गया, वो शीट शेयर करता हूँ, इस सबसे करो, उसका भी कुछ वरी करने की जरूरत नहीं। हर एक को 1 यूनिट से एक ही प्रॉब्लम देता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन रहेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, बट हर एक को अलग अलग क्वेश्चन है। ओके, 1 यूनिट से एक, ऐसा 6 यूनिट के ऊपर 6 आपको एक तो प्रॉब्लम रहेंगे, नहीं तो थ्योरी रहेंगे, उतना ही लिख के आपको सबमिट करना है, एंड यू हैव एनफ टाइम, नो प्रॉब्लम। बट वो भी मतलब क्लियर करके देता हूँ, आई एम बिजी विथ सम अदर वर्क इन द इंस्टीट्यूट फॉर द पास्ट 10-15 days, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो बट आई विल डू इट फॉर यू पीपल at the earliest, maybe within 2-3 days I'll finalize it. Will it be okay? Yes, sir. Okay, okay, fine. थैंक यू। अभी क्लास लेते लेते मुझे अभी 8 फोन आके गया, इधर रिसीव नहीं किया। एनी अदर प्रॉब्लम्स, एनी योर क्वेरीज? Karina, hope I think I'm clear, and just you spread this message among everyone about assignment, about submission, as well as practical exam. You need not worry, I'm there, I'll assist you every time, and before that also I'll tell you in what way we supposed to progress. Okay, I mean, in what way we supposed to complete the examination. Is it clear? Yes, Yes. sir. Okay, yeah, thank you Omkar, Mandar, Akshay, Amar, Karina, and Kiran. Shall I wind up? Tomorrow maybe I'll require 1 hour, but depending upon availability of mine in from the institute work, I'll give you. Otherwise, other professor will deal, no problem. But class will be there tomorrow. ठीक है? Okay, sir. ओके ओके, वो फॉर्म भर दिया ना सब लोगों ने? Fields. ओके ओके, फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम।
Okay then, thank you. Take care. Bye bye. Shall I close?
काढत आपण रात्रंदिवस एकमेकांशी भांडत असतो आणि कोण म्हणतं देव लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधत असतो. जन्मोजन्मीचे बैल काढत जन्मी त्याला म्हणते जन्मोजन्मीचे बैल काढत जन्मोजन्मीचे बैल काढत आपण रात्रंदिवस एकमेकांशी भांडत असतो आणि कोण म्हणतं देव लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधत असतो. जन्मोजन्मीचे बैल काढत आपण एकमेकांशी रात्रंदिवस भांडत असतो आणि कोण म्हणतं देव लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधत असतं. लग्नापूर्वीचे गुलाबी दिवस लग्नानंतर कधीच राहत नाही. एकदा लग्न लावून दिलं की देवही वरून खाली पाहत लग्नापूर्वीचा तो हुशार नवरा लग्नापूर्वीचा तो हुशार नवरा भलताच मूर्ख वाटायला लागतो. लग्नापूर्वीचा तो हुशार नवरा भलताच मूर्ख वाटायला लागतो. तिच्या चेहऱ्यावरचा प्रेमळ मुखवटा हळूहळू फाटायला लागतो. तिच्या चेहऱ्यावरचा प्रेमळ मुखवटा हळूहळू फाटायला लागतो. ती कधीतरी आपल्या मनासारखं वागेल हे प्रत्यक्षात कधीच घडत नाही आणि एकदा लग्न लावून दिलं की देवही वरून खाली पाहत नाही.
कुठे कुठे पोहोचले आले मुलं आले खाली मुलं आले म्हटलं नाही तुझ्याकडे